they had taken Warner Bros का एक whole studio on rent where it's like a whole city, you know, LA में है ये, और वहाँ पे उन्होंने 20-25 साइबर कैब्स लेके आए, and there were total around 50 cyber cabs in that city, and they were roaming around autonomously. Party, they are doing actually a party or a We Robot party. So let's Right. watch this party. ये सही है। अब इलॉन मस्क को कुछ भी करना है, पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज, तो टेंशन नहीं, खुद के रोबोट से। Welcome to the We Robot Party. As you can see, I just arrived in the RoboTaxi, the cyber cab, and there's 20 more where that came from. ये किडनैप करने आएंगे तो मजा आएगा ना? So you'll see Model अंदर कोई Ys होगा ही नहीं भाई। and the cyber cab, all driverless. You'll be able to take a ride in the cyber cab. There's no steering wheel or pedals. There's no steering wheel or pedal, भाई साहब। So I hope this goes well. अब कार के साथ लाइसेंस फ्री आएगा, उसके साथ नंबर प्लेट के साथ। भाई वो खुद ही बोल रहा है, I hope this goes well। मतलब उसको भी नहीं पता है भाई क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the cost of cybercab, we think probably over time, from the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. On $1 a mile, From 20 cents a mile. So it's gonna 5 times. reduce it 5 times. Operating cost. That's pretty cool. 20 रुपए में मैं पहुंचूंगा फिर ऑफिस। Yes. बट कितने बजे पहुंचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। यस, वो चल जा ही नहीं रहा है आगे। विमाननगर के सिग्नल पे खड़ा है, वेटिंग फॉर एवरीवन टू गो। भाई वो कभी नहीं निकल पाएगा, मुझे लगता है। विमाननगर से निकला तो एडवाड़ा में फंस जाएगा। भाई देख, बंदा फुटबॉल देख रहा है और कुछ तो ड्राइंग कर रहा Price, है, including मतलब होमवर्क भी taxes कर and, रहा है। and everything else, वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम कार हो जाएगा फिर। probably ends up being 30 or Yes. 40 cents a mile. So yes, and you will be able to buy one. चलने साथ भाई यही 2 खरीद लेते, टैक्सी ऑटो में, ओला में डाल देंगे। अरे ये Yes, 2026 में आएगा ब्रो, अभी नहीं आ रहा है। And we expect the cost to be below $30,000. We do expect actually to start $30,000 रोहन, 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया है। 25 लाख रुपए की टैक्सी खरीदेगा क्या तू? लेकिन उसके बाद आई थिंक इंपोर्ट टैक्स भी तो मारेगा 100%। इंडिया में तो मैं गेन ही नहीं रहा हूँ। देख, अगर गलती से मेरे 50 जिंदगी में कभी लाख। ऐसा मौका आया कि मैं फॉरेन घूमने गया, तब मैं साइबर कैब में बैठूंगा, वरना तो इंडिया में तो भाई अपन रैपिडो वाले सही है। यस, रैपिडो वालों को कंपटीशन दे रही है। fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. ओके, And सुना तेरे को टेक्सास जाना है पढ़ने या फिर कैलिफोर्निया जाना है जॉब करने? टेक्सास और कैलिफोर्निया में अनसुपरवाइज्ड फुल सेल्फ ड्राइविंग विल कम इन नेक्स्ट ईयर, सो दे आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दोस टू रीजन्स and then they will slowly expand region. that's obviously that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the cyber cab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably, well, I tend to be a little optimistic with timeframes, but in 2026. इसी लाइन के कारण मेरा शेयर गिरा है। भाई वो 2016 से बोल रहा है कि मैं ऑटोनॉमस कार ले गया होगा, ऑटोनॉमस कार ले गया होगा। तभी तो भाई फर्स्ट नंबर से कौन से रैंक पे आ गया अभी टेस्ला, पता नहीं। एक टाइम पे फर्स्ट आ गया था ना। Before 2027, let me put it that way. When you get in, you'll see like it's really quite a wild experience to just be in a car with no steering wheel, no pedals, no controls. यही वो एरिया है And it ना feels great. हॉलीवुड का जो तू बोल रहा था? यस, ये पूरा एरिया जो फीड में दिखाया गया है वो वार्नर ब्रदर्स का सेट है, जहाँ पूरी सिटी है। यहाँ पे शूटिंग वूटिंग भी हुई है काफी फेमस मूवीज की। अच्छा, तो इंसेप्शन 1-2 मूवीज की हुई है यहाँ। तो पूरा एरिया ही लीज कर लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। Something we're also doing is, and it's really high time we did this, is inductive charging. So the RoboTaxi has no plug. साफ सफाई It रोबोट। goes over the inductive charger and charges. So yeah, kind of how it should be. Oh, and also, what happens if you need a vehicle that is bigger than a Model Y?
The RoboTaxi. The This is RoboTaxi crazy, is Rohan. ये खतरनाक लग रहा क्या है लेके भाई। आया है भाई? ये क्या लेके आया है भाई? रोबो कहाँ से वैन। लेके आया है? मतलब कार कंपनी है तो कुछ भी करेगा क्या? कार कंपनी तो है ही नहीं वो, मतलब कुछ रैंडम ही चीजें बना रहा है लेकिन। दिस इज द रोबो वैन, राइट? करेक्ट। जब जब 4 सीटर से ज्यादा की जरूरत हो डायरेक्ट तो 20 ये काम सीटर। आएगा बोलते हैं। 6 लोगों तो भी ये लेना पड़ेगा मतलब ऐसा। ओला ओला शेयर टाइप्स है ब्रो ये, मतलब उसमें और भी तुम बैठ सकते हो ऐसे। this is पुल आउट स्टेशन। खतरनाक दिख रही so है। we're going to make this, and it's going to look like that. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? That'd be sick. ओ भाई सच में आदमी निकल रहे हैं, मुझे लगा डमी पीस। नहीं ब्रो, चलता हुआ पीस So दो। this can carry up to 20 people, and it can also transport goods. So you can Up to configure 20 for people. goods transport within a city, or transport of up to 20 people at a time. So this is gonna the RoboTaxi is what's gonna solve for high भाई ये तो density. ऐसा लग रहा है लाउंज So में आ गया। if you want to take a sports Correct. team somewhere, or चलता फिरता लाउंज। you're looking है भाई, ये लेगा अभी आईपीएल वाले लौंडे लेंगे 20 लोग ना, 20 की टीम। बट अटक जाएगी ब्रो, गाड़ी रुक जाएगी बीच में। अच्छा इसमें भी पेडल्स नहीं है और स्टीयरिंग नहीं है ऐसा? फिर तो मुश्किल है मुंबई में जाना। to really get the cost of travel down to, I don't know, 5-10 cents a mile, then you can use the RoboTaxi. Some people call it the RoboVan, but speaking of robots, so everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. It's the same techniques. It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. तबाही। And we've made a आ lot of चुका है progress छोटा चिट्टी। with चिट्टी। And as you can see, we started up with someone in a robot suit, sort of that, and then we've रोहन 3 साल progressed. पहले इनका एक बंदा स्टेज पे आया था और वो रोबोट का कॉस्ट्यूम पहन के आया था और वो डांस कर रहा था कि भैया ये है हमारा ऑप्टिमस रोबोट। एंड 3 साल बाद उन्होंने इतना बना लिया है। The Dramatically rate year of after progress year. is really good. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular, something that anyone could own. So you could have your own personal R2D2 C3PO. क्या बोला? R2D3 R2D2 R2D2 C3PO ब्रो, ये स्टार वॉर्स का रेफरेंस है। उसमें 2 अच्छा। रोबोट्स थे, जिस एक का नाम R2D2 था और एक का नाम C3PO था। हाँ हाँ, याद आया याद आया याद आया। हाँ, तो बोल रहा है कि तुम्हारा पर्सनल ऐसा बना है, ऐसा दिया जा सकता है। And I think at scale, this would cost something like, I don't know, $20,000-$30,000. Probably less than a car. Is my कार और ये मतलब सेम प्राइस में $30,000 30,000। prediction long term. Yeah. Take us a minute to get to the long term, but fundamentally at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot. So for, it is I going think, to do about like रोहन household chores as well. घर के काम वाम भी करेगा रोहन। करेक्ट। एक तो मैंने तेरे रील्स घर पे आएगा, उसके बाद तू क्या करेगा? है खाना बनवाऊंगा उससे। खाना बनवाएगा। तो फिर स्विगी वाले का लॉस हो जाएगा ब्रो। यस, स्विगी का पैसा मैं इसमें डाल दूं। ऐसा मत कर ब्रो। कम ऑन ब्रो, क्या करवाएंगे फिर बता। देखते हैं ये लोग क्या करवा रहे हैं, पहले अपन वो तो देखते हैं। ये झाड़ तो को भाई पानी देने के लिए प्लांट मैं 20 लाख का रोबोट नहीं खरीदूंगा ना, झाड़ को पानी देने के लिए। एक झाड़ को पानी देगा, $20,000 to $30,000 long term. So, फिर ये गेम खेलेगा तेरे साथ। and what मेरे can को it do? टेबल पे बैठा हुआ नहीं It'll चाहिए, basically वो जमीन do पे anything you बैठना want. चाहिए So, ऐसा। कुत्ता थोड़ी ना है। अबे जमीन पे वो पैर फोल्ड करके जो बैठता है ना, पलटी मार के, वैसा चाहिए अपने को उसको। भाई ये वाला डेटा सेट नहीं है उनके पास, यूएस में ऐसा डेटा सेट नहीं आता। ऑन ब्रो, उसको क्या मालूम पलथी मार के बैठना। आना चाहिए ब्रो, क्यों नहीं आना चाहिए? डेटा सेट इश्यूज। चल देखते हैं आगे। so it can get ये देख, ये मेरा वाला है, खाना बना रहा है। किचन वाले काम रोहन। यस। ये teacher तो or भाई babysit बड़े your kids, अच्छे तरीके से साफ सफाई कर रहा है यार। walk your dog, mow your lawn, get the मुझे अपने groceries, मेड के लिए चिंता हो रही है just be bro। your friend. भाई मुझे तेरे पूरे अपने मेड के लिए चिंता हो रही है। तेरे पूरे बिल्डिंग में भी 50 मेड तो होंगे। यस यस। अब तेरे को 50 रोबोट दिखेंगे फिर थोड़े दिनों बाद, ऐसा? नहीं ब्रो, ये सब इंडिया में नहीं आएगा ब्रो, कितनी बार बोले, इंडिया में ये सब नहीं आएगा। 20 लाख रुपए में तो एक आदमी को जिंदगी भर के लिए हायर करके रख सकता है, इतना इतना पैसा है तो।